Hey guys, welcome back again to Saturday CSAT session. As per our target, in today's Saturday, we are going to cover the topic cubes and dices. So this is a very familiar topic. You might have played Ludo or any kind of games where you have experienced playing with these dices, or you might have seen a cube. So this is simply as part of logical reasoning. These questions are asked to check your visual capability. So all you need to do is visualize these things. Of course, I'll be giving you some tips and tricks to remember how to unfold and fold a dice, or how to visualize a cube and solve these questions. I've done a little bit of research on it as usual. Say in the past 11 years, there were 11 questions from this particular section. That means on an average, you can expect one question per year. However, this is not so consistent. If you see till 2019, the questions are almost consistent. At least you can expect one question barring 2014, and 2019 two questions were there. So then for 3 years, there was no question asked from this particular section. But again, the 2023 year, there were two questions from this particular section, and these two questions are a little bit complex. Like they were asking based on the statements, and you need to find whether data deficiency, sufficiency, or statement 1 or 2 both are correct, or only one correct, or two correct, or neither of them are correct, that kind of questions. So the difficulty level has been slightly increased, but the concept is remaining same. Alright, without delay, let us look at the questions. The very first question is, a cube has 6 numbers marked 1, 2, 3, 4, 5, 6 on its faces. 3 views of the cube are shown. Of course, ये diagram question के अंदर खुद दे दिया है. Now look at this diagram 1, 2, 3 where different views of the dice or cube has been given. And based on these views, we need to tell what are the possible numbers that can come at the position of A and B. Alright, let us solve it. See, always remember the trick. Whenever you see this kind of positions of a cube or a dice, always see what is the common number here. See, between 1 and 2, the common number is 1. Okay. So leaving this common number, you have 6, 4, 3, 2. So what is the number that is missing? That is 5. So 5 is the number which is missing. So from 1 and 2, we can deduce that 1 and 5 are opposite to each other. This is for sure we can deduce. And then this position, like adjacent positions, we can't surely tell, but this we can surely tell. Similarly, take second dice and third dice and look at which one is the common, that is 3 here. Barring 3, what are the numbers that are available to us? 1, 2, 5, 6. That means 3 has the number 4 as its opposite, because that is the number which is missing here. This is another information we can deduce from here. Now with this information, we can solve it. Just always remember, whenever you see this kind of position of the dices or cubes, always go with this approach. Find the common one and see which one is the missing. Obviously, that one is the backside of this one, that is opposite of it. That's the reason why it is not visible in any of the possibility. Simply exam में एक काम करो, sharpener या razor जो होता है 3 डायमेंशनल क्यूब के जैसे, वो लेकर जाओ और ये जो व्यूज दिया है उसको वहां पर लिख के देख लो कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो रहा है. ऑब्वियसली जो पीछे वाला साइड पे जो बचेगा दैट इज द सेम नंबर. ठीक है, सिंपल. अदरवाइज यू रिमेंबर दिस ट्रिक, जो कॉमन है एंड जो नहीं मिल रहा है, कॉमन वाला जो नहीं मिल रहा है वाला, वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे. सिंपल. सो नाउ फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन लेट अस ट्राई टू लुक व्हाट आर द पॉसिबल positions or possible numbers that can see it in A and B position. Look at this. The adjacent number that is given is 5. That means the only number which is opposite to 5 cannot come here at the position of A and B. बाकी सब numbers आ सकता है. So what is the number which is opposite to 5? That is 1. That means A and B पे 1 नहीं हो सकता है. Barring 1 you can find 2, 3, 4 and 6. ठीक है, इतना तो कंफर्म है. वेयर एवर यू सी 1 यू एलिमिनेट दैट ऑप्शन. ठीक है,
and see 1 here, so 1 is not a possibility to come adjacent to 5, so I'll eliminate this, I'll eliminate this, I'll eliminate this. So the only option that we are getting is 2 and 3, that is A. That's how we come to the answer. Simple. Okay? Of course, this was asked in 2013, that's why very simple question. Now, let us look at the second question from this section. Question is, each of the 6 faces of a cube has been coated with a different color. क्या कलर्स दिया है? विप जी योर, और हटा के बाकी सारे कलर्स दिया है इन द रेनबो. सो विप जी यो दिया हुआ है कलर्स. नाउ certain conditions are given. On the basis of this condition, we are to find what is the color of the face which is opposite to the face which is colored with वो. ठीक है. सो यहां पर एक और छोटा सा ट्रिक बताता हूं. सी whenever you see such combinations and if you see two things are common in two and remaining वाला जो है वो opposite हो जाएगा. Again, let me repeat it. Take with the example. Take 1 and 3. See 1 and 3 में क्या क्या कॉमन है? Y is common, B is common. ठीक है. What are the ones which are which are not common? That is O and G. So from 1 and 3, what we can conclude is O and G will be opposite to each other. Just simple visualization. See, if we draw the visual presentation of that first and 3, see, based on the information that is given there, you can say, suppose say this is the O color, then this is B and this is Y based on 1. Similarly, if you take another cube, ठीक है, and here also if you take which one common? Two things are common here. What are they? Let's take this one as okay, now this cube is little different. So if I take this as, let's say, B, and another one, this side one is G, and obviously this one is Y, or this one is Y. So in this representation, what we get is this O, definitely it will be opposite of यहाँ पर O होना चाहिए in order to get this representation. So that's how we can conclude that from 1 and 3, where two of them are common. See, B common, Y common. So जो बचा हुआ different indifferent वाला जो है, they must be opposite to each other. So this is one conclusion we can make it. Similarly, second conclusion can also be made. For example, take 2 and 3. From 2 and 3, G common, Y common. That means I and B must be opposite. ठीक है. So that is another conclusion that we can make. So in this manner, if we conclude and make the entire dice, the resultant is going to be looking like this. Look at this. I and B opposite to each other. O and G opposite to each other. Y and V opposite to each other. So now what we need to find? We need to find the face opposite to the face which is colored with O. So what is that? That is G, and the correct answer is going to be G here. Simple. You just have to practice it. Simple. ठीक है. Next. So far I have given you 2 tricks. Number 1 is, that is, whenever you have common one face, all numbers are different. The missing number will be going to be the opposite of that common one. When you have 2 things as the common, the different ones are going to be opposite to each other. ये 2 points याद रख लो. Now let us go to the another question. The question is, a cube has all its faces painted with different colors. It is cut into smaller cubes of equal sizes such that the side of the small cube is 1/4 of the bigger cube. The number of small cubes with only one of the sides painted is, number बताना है. So for that what we do is, let's draw a cube. ठीक है. I'm going to draw one surface of it in order to explain it to you. Let me take 4 centimeter length and breadth वाला एक surface ले लिया. This is a cube. I'm only taking one surface of it, which looks like a square. So यहाँ पर अगर इसको 4 equal cuts में, of course this is not equal, but you make it equal. ठीक है. If you cut it into 4 equal, 1/4 बनाना है ना, तो यहाँ पर भी 1/4 ऐसे 4 बनाएंगे. So on each surface you are going to get 16 cubes.
Say I'm only taking one surface, top view मान लो only one surface, but it is painted. So that means this one, this one, this one, this one, all 16 of them are painted. And इसमें से भी देखो यहाँ पर एक और सरफेस आएगा यहाँ पर ऐसे, and here another surface, here इस side another surface, नीचे एक और surface, and on the back side there is one more surface. This is how the cube looks like, right? Now what is the question saying? After cutting into the smaller pieces, we need to find only those smaller cubes which have only one side painted. अब देखो ये वाला कॉर्नर पे जो क्यूब है, अगर इफ आई यहां पर भी ऐसे है ना, सो इफ आई टेक दिस क्यूब वन कॉर्नर वंस इस लाइन पे, so this will be having two sides, this side one and this is another side, even इस edge पे एक और side, इस side पे edge पे एक और side, 3 हो जाएंगे. So this you have to skip. Similarly इस लाइन पे जो आता है इनको skip करना पड़ेगा, and इस लाइन पे जो आता है इनको skip करना होगा, इस लाइन पे जो आता है इनको skip करना होगा, और आपके पास जो बचेगा on each side is going to be, let me take yellow color to highlight it. ठीक है, yellow is not visible, let me take another color, let's say blue color. ठीक है, only this much portion जो है, that is the only portion which is left now after removing all of it. Now in this also जो surface के ऊपर जो है यहाँ पर, these are the only 4 squares, 4 cubes. I'm calling it as squares because only one surface I'm taking. 4 cubes which have one side painted. ठीक है, simple, one side painted. Now on one surface how many you are getting? 4. But how many such surfaces are there? In a cube, you get 6 surfaces. In the very first slide, I have shown you that here, look at it. In a cube, how many surfaces you get? 6 surfaces. Okay. So in one surface, if there is 4 cubes which are painted on only one side, then in 6 surfaces, it will be 6 into 4. So altogether you will be having 24 small cubes which are exactly painted on only one side. Clear? देखो ये 4 है, इस साइड का सरफेस पे भी 4 मिलेंगे, यहाँ पर इधर सरफेस पे भी 4 मिलेंगे, इधर सरफेस पे भी 4 मिलेंगे, यहाँ पर भी 4 मिलेंगे, यहाँ पर फ्रंट पे 4, और ये जो पीछे वाला, इसके पीछे वाला जो है वहां पर 4. 8, 12, 16, 20, 24. So the answer will be 24. Simple. ठीक है, ये कई बार रिपीट होता है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द डिपिक्शन ऑफ द सेम. सो लुक एट दिस, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, इस साइड 4, इस साइड 4, नीचे से उस साइड. ठीक है, टोटल 24 हो गया. देन नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. सी द आउटर सरफेस ऑफ 4 by 4 by 4 cube is painted completely in red color. मतलब let me draw that cube here. ठीक है, now I'll make complete 3D dimensional cube. ठीक है, ऐसे क्यूब है, एंड दिस क्यूब 4 by 4 है, मतलब इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये वाला जो है, okay, let me call that as breadth and this as height and this as length, all of it is 4 centimeters. Now such a cube is painted completely in red color. चलो इसको red color कर दिया था. Now it is sliced parallel to the face to yield 64 1 by 1 by 1 small cubes. That means क्या किया था, इसको 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखो, यहाँ से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पे ऐसे पैरेलली स्लाइस किया, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पे. सो देखो इस तरीके से जब 3 डायमेंशनली आप पैरेलली स्लाइस करते हो, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स यू आर गोइंग टू गेट? ऑब्वियसली 64. ठीक है, 64 स्मॉलर क्यूब्स यू हैव गॉट. एंड हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव अ पेंटेड फेस? अर्लियर देखो सेम सिचुएशन, दे वर आस्किंग ओनली वन साइड पेंटेड, तब आंसर आया था 24 क्योंकि 4 4 4 था. बट हमारा मेन इंटरेस्ट अब जो है, इसके अंदर पे जो मिलेगा आपको, इस पे रहेगा ना. ठीक है, दैट मीन्स यहां पर 1 सेंटीमीटर में काट के हटा दो क्योंकि इसके ऊपर कलर रहेगा, और यहां पर 1 सेंटीमीटर में काट के हटा दो, उसके ऊपर भी कलर रहेगा. तो यहां पर भी ऐसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर चारों तरीके से कट गया. सो बीच में जो रह गया, ठीक है, दैट पोर्शन 1 by 1 by 1 वाला पोर्शन, that is the only portion which is going to be available for us. ठीक है, so यहाँ पर if I am to say ये portion
ठीक है, ये पोर्शन एंड इस साइड भी। अब इन सब का लेकर सेंटर पे जाएंगे, दैट इज द ओनली पोर्शन वेयर वी आर गोइंग टू गेट द नंबर। ठीक है, सो वो कितना होंगे सेंटर पे जो रहेंगे, दे विल बी 8 ऑफ देम। ठीक है, यू विल फाइंड 8 ऑफ देम। ठीक है, 8 सच क्यूब्स विच आर नॉट, विच आर एट द सेंटर, विच आर नॉट पेंटेड विथ एनी कलर ऑन एनी फेस, वो एकदम सेंटर पे मिलता है आपको। इसके लिए देर इज अ स्मॉल फॉर्मूला, व्हाट इज दैट, n minus 2 whole cube, where n is that number of like slices that have been made। यहाँ पर 4 slices बनाया है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर्स का है, 1 सेंटीमीटर ईच करके 4 slices बनाया है। सो n is going to be 4 minus 2 whole cube, that is 2 cube, which is going to be 8। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला याद किया, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। सी फॉर्मूला इज फॉर दोज क्यूब्स विच आर नॉट एट ऑल पेंटेड ऑन एनी फेस। कहीं और सिंगल फेस पे काम नहीं आएगा, डबल फेस पे काम नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। बेस्ट टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। अगर नहीं है, इफ यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर नॉट पेंटेड, द क्यूब्स विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, देन you can use this formula and get to the right answer। ठीक है, ये -2 भी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये दो साइड कट के हट जाएगा, यहाँ पर और इस साइड पे, इस साइड पे। ठीक है, ऐसे सारे साइड से दो साइड्स कट जाएगा, एंड दैट्स द रीजन वाई सेंटर पोर्शन पे जो आएगा वो वाला यहाँ पर चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, दैट्स द रीजन। ठीक है, ऊपर से 2 साइड चला गया, साइड से भी 2 चला गया, ये वाला पोर्शन, ये भी इसको नहीं कवर कर रहे हैं हम, सरफेस वाला, इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो आएगा उसको कवर कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड painted on all its faces and is cut up into cubes of 1 centimeter side. How many small cubes will have exactly 2 faces painted? So मैं आपको एक होमवर्क के जैसे देना चाहता हूँ, so that I know whether you are making, whether you are watching this video or practicing this or not। लेकिन हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या करना है, सेम अगेन यू मेक ए क्यूब। ठीक है, अब क्यूब का साइज जो होना चाहिए 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, एंड इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे। तो सरफेस पे कितना आएगा, इस सरफेस पे 9 क्यूब्स, आपको 9 स्क्वायर्स दिखने लगेगा। नाउ द सेम यू एक्सटेंड इट टू 3 डायमेंशनली एक्सटेंड कर लो। ठीक है, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, एग्जैक्टली 2 साइड्स पेंटेड। 2 साइड्स पेंटेड कब आएगा, सी ये सेंटर वाला पे आएगा, लेकिन इस पे नहीं आएगा, क्योंकि इस पे 3 साइड्स पेंट हो जाएगा, क्योंकि इस साइड का भी पेंट हो जाता है, इस साइड का भी पेंट हो जाता है, सेम इस साइड का भी पेंट हो जाता है, इधर एंड इधर का, और यहाँ का भी पेंट हो जाता है, इधर का भी पेंट हो जाता है। सो ये कोने पे जो आता है वो भी काउंट नहीं होगा, और ये सेंटर पे है ये भी काउंट नहीं होगा, बिकॉज इट इज ओनली पेंटेड ऑन वन फेस। बट द ones which I'm going to mark in the red, like this one, this one, this one and this one, they are exactly painted on 2 sides। ये एक साइड हो गया, इस साइड में एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, इस कोने पे एक साइड हो गया। ठीक है, in this manner these are the ones which are painted exactly on 2 sides। now the illustration something looks like this। ठीक है, if we count it, the cubes which are which are painted exactly on 2 faces, क्या क्या होंगे, this is 1 इस साइड को मिला के, 2 इस साइड पीछे वाला को मिला के, this is 3 and 4, यहाँ पर 5 इस साइड को मिला के, 6 इस साइड नीचे वाला, मतलब बॉटम वाला फेस के साथ, then this will be 7, this will be 8, this will be 9 and 3 more will be there on the other side with the 2 faces। इस साइड दोनों को मिला के 3 more you will find it। so total हमें कितना मिलेगा, 12 such 2 faces painted cubes will be there। so the answer is going to be 12। ठीक है, now let us look at the another question। see question is, each face of a cube can be painted in black or white colors। in how many different ways can the cube be painted? This is the question। see this is a little bit difficult question। why I'm saying little bit difficult, here 2 concepts are being clubbed। one concept is with respect to your cubes and coloring of the cubes, where your visual ability is being checked। on the other side there is another topic which is merged in it, that is the combinations, the permutations and combinations concept। because 2 colors है, इनमें से either of them के साथ you have to paint the surface। ठीक है, so that's where this permutations and combinations is going to come into picture। so it is slightly difficult one।
What you need to do is you need to check all the possible combinations. I've written it down, just have a look at this. There are 10 such cases. Kaise? First of all, you have the like choice of painting all the 6 sides with one color, that is either with the black or with the white. So in this you get two possibilities. Then comes, see, 2 adjacent sides can be painted with white, and then you can go for remaining 4 sides with black color. Same, 2 adjacent sides can be painted with black, remaining 4 side with 4. So this is 2 more possibilities, 2 plus 2. Then 2 opposite sides. Earlier 2 adjacent sides, now you are going for 2 opposite sides with white and 4 sides with black. Same, 2 opposite sides with black and 4 sides with white. So this is another 2 more, plus see 3 sides with the same corner. मतलब क्या है, ऐसे कोने पे जो मिलता है, ये वाला ये वाला ये वाला जो कॉर्नर पे मिलता है उनको, ठीक है. सो 3 साइड्स with the same corner white color, remaining other 3 sides जो होता है वो black color के साथ कर सकते हैं. Then 2 opposite sides and 1 center side with white color and other with 3 black colors. So there is 2 more possibilities. Then comes, you have 1 side with black and all other 5 sides with white color, and 1 side with white and all other 5 slides with black color. So this is 2 more possibilities. Sare, how many ways? In 10 number of ways you can paint all the faces of the cube either in white or in black color. So the answer is going to be B here. Of course थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं. For that you need to know the exact combination, like 6 faces है, so selection कैसे करना है. फिर इसमें भी conditional selection है. It's not a simple selection कि आप 6C2 formula use कर दो. No, it won't happen because there is a selection. Like again there is a condition, either of them. ठीक है. So better to go with this counting. And इतना complex question आया तो my advice will be leave this topic, leave this particular question and go to some other question in the exam to solve some easier one. ठीक है, अगर इतना कॉम्प्लेक्स आता है. अदरवाइज सिंपल जैसे अर्लियर हमने देखा था ऐसे आए तो ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व इट विद ईच. नाउ लेट अस गो टू द अनदर क्वेश्चन. ए सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लू एंड ब्लैक सच दैट opposite faces are of the same color. मतलब अपोजिट फेसेस जो है सेम कलर में होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन देखो. See, are you noticing it? As we are going from 2013 towards 2023, the difficulty level is increasing in these questions. ठीक है, this is true with all the segments, not just with cubes and dices. You can see such kind of trend in almost all the questions, even in the ranking, even in average, any topic you take. This is the trend I have seen. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, और भी कंडीशन. The cube is then cut into 36 cubes of 2 different sizes, not just one. Earlier it used to be only 1 different size, मतलब सारे छोटा छोटा क्यूब्स एक जैसे बनाते थे. अब इस बार क्या बनाया था, 2 different sizes में 36 क्यूब्स काटा है. उसमें क्या है, 32 क्यूब्स जो है they are small and remaining 4 cubes are big. तो कॉम्बिनेशंस देख लो. So accordingly you need to make that, you need to visualize and make that. And there is another condition, none of the faces of the bigger cube is painted in blue. So reasoning देखो कितना कॉम्प्लेक्स बनाते गया है. अब इसमें 3 लेयर्स है. एक लेयर जो है कलर वाला, ठीक है, दूसरा वाला लेयर जो है वो फेसेस, अपोजिट फेसेस, ठीक है, उससे रिलेटेड कंडीशन. थर्ड वाला लेयर जो है रीजनिंग का, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू साइजेस ऑफ द क्यूब्स. ठीक है, 2 साइजेस है, एक स्मॉल साइज है, एक थोड़ा सा बिग साइज है. ठीक है, सो इस 3 लेयर का रीजनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा. ठीक है, अगेन दिस इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, इट इज गोइंग टू कंज्यूम मोर टाइम. आई वुड सजेस्ट ऐसे कॉम्प्लेक्स जगह पे यू कैन गो ऑन, स्किप इट एंड गो ऑन टू अनदर क्वेश्चन. सो इसका अगर ड्रॉ करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कट करेंगे तो कैसे लगेगा विजुअली देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटायर बिगर क्यूब हैज टू बी कट इनटू टोटल 36 क्यूब्स. 32 स्मॉल होना चाहिए एंड 4 बिग होना चाहिए. इंडिकेशन वैसे तो लग रहा है, इफ यू टेक 4 by 4 by 4 देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऊपर सरफेस पे एक लेवल का जो है उसको क्या कर सकते हैं, 4 by 1 by 1 करके एक सरफेस को काटो, इसको 16 बना सकते हैं. एंड सिमिलरली नीचे वाला जो है उसको भी
4 by 1 करेंगे, देन अगेन यू कैन मेक 16 सच 1 by 1 बना सकते हैं। यहां पर भी 16 सच 1 by 1 बना सकते हैं। अब देखो ये छोटा क्यूब्स है, यहां पर 16 बनाया है और यहां पर 16 बनाया है, टोटल 32 आ गया। नाउ जो बचा हुआ एरिया है, हाउ मच एरिया, नाउ यू हैव 4 by 2, ठीक है। एंड उसमें भी देखो 4, एक और एलिमेंट, अच्छा 4 में से ये भी 2 कट गए ना, सो 2 by 2 ये वाला मिलेगा हमें। सो इफ यू टेक 2 by 2 इसको 4 बिग ब्लॉक्स में कट करना है, सो सिंपल यू कट इट इनटू दिस। यहां पर देखो एक और कट गया, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम्स 4 इंटू 2 कर दो ना, ठीक है, इस साइड पे दिख रहा है। सो दैट्स वेयर दिस एंटायर थिंग इज 4 एंड दिस वन इज 2, दिस वन इज 2। अब ये 4 वाला को अगेन 2 में कट कर दिया, सो 2 by 2 आ गया, यहां पर भी 2 by 2 आ गया। सो ऐसे कितने मिला था, 1 2 3 और वो पीछे है एक और है चौथा वाला, सो 4 बिगर वाला मिल गया। सो दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, ऑल द अपोजिट फेसेस हैज टू बी पेंटेड विद द सेम कलर। देन एक और कंडीशन बोल रहा है कि जो बिगर ब्लैक जो है, लाइक बिगर क्यूब्स आर नॉट पेंटेड विद द ब्लू कलर। इफ यू टेक, सो बिगर ब्लॉक्स हमने कहां कहां पर रखा था, यू कैन सी बिगर ब्लॉक्स आर पुट एट द सेंटर। सो सेंटर एरिया पे हम ब्लू कलर नहीं डाल सकते, इसलिए ब्लू कलर को ऊपर और नीचे ले लो। सेंटर पे ब्लैक एंड येलो कलर डाल सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेयर आवर बिगर क्यूब्स आर देयर। यहां पर और यहां पर ब्लू कलर है। नाउ ऑन दीज बेसिस वी नीड टू सी हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड, दैट इज व्हाट वी नीड टू सी, ठीक है। तो कितना आता है, आई एम गिविंग यू एज होमवर्क आफ्टर सॉल्विंग एंड पुटिंग ऑल दीज थिंग्स, यू सॉल्व इट एंड टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। मैंने आपको सॉल्व करके सारे विजुअलाइजेशन करके रख दिया है। ऑल यू नीड टू डू इज काउंट द faces with only one face being painted. So ऊपर कितना आएगा ये काउंट कर लो, यहां पर ये सिर्फ ये 4 आएंगे, नीचे भी ऐसे 4 आएंगे, और बीच में जो वन फेस पेंटेड वाला है वो देख लो, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एंड अकॉर्डिंगली यू आंसर इट, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See, there are 125 identical cubes that are arranged in the form of a cubical block. ठीक है, एक मतलब एक रूबिक क्यूब्स के जैसे बनाया है। so, यही से आपको आइडिया मिलना चाहिए, इट मींस 5 into 5 into 5 वाला क्यूब बनेगा ये, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, मतलब ये 2023 में पूछा गया सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से बन जाता है। जस्ट सॉल्व इट बाय योरसेल्फ यूजिंग द सेम लॉजिक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक में बना दिया है, एंड हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, मतलब सेंट्रल में कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। इट्स इजी टू सॉल्व, यू सॉल्व इट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। से कमेंट सेक्शन में बताने के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस होमवर्क दिया था, दिस इज दिस क्वेश्चन एंड इसका आंसर, एंड इससे पहले 1 more क्वेश्चन। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस, यू हैव टू answer it in the comment section. So this is all about this particular topic. I hope this particular topic is useful. If it is, please like it, share it and subscribe to the channel and share it among your fellow aspirants so that these efforts reaches to the other aspirants, and this time we won't feel CSAT is little difficult. That's it everyone. Take care and solve as many questions as possible. I have purposefully left 1 or 2 questions from the previous year questions. You can solve them, and if you get any doubts, please put it in the comment section. I'll definitely address each and every one of your comments. Thank you very much. See you in the next Saturday with another topic. Till then, take care. Bye everyone.